Hi guys, good afternoon. I'm sure I'm live. Let me see if I'm live. I hope you can see me also. So, as a message in the community section an hour ago that I was planning to go live at 12:30 today, a couple of minutes late, but it was very important for me to go live and then speak to all of you because I'm very sure that you are witnessing the kind of market going one way into a falling spree, mainly into small and mid, and now if you look at even today into large caps. लॉट ऑफ ट्रिगर हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, एंड यूट्यूब पे जाके आई चेक इफ यू गाइस आर ट्यूनिंग इन. Lot of questions which have come on WhatsApp. I'll take them now one by one so that I can give clarity on our thought process, and also would like to reassure you. देखिए हम लोग का क्या है कि we are a very concentrated portfolio. अगर आप देखोगे तो 5 to 6 to 7 names across all our baskets. At large, we have a coverage of nearly 35 names overall, right? So अगर आप हमारे 6 बास्केट में देखोगे तो जो कवरेज हम कर रहे हैं 30-35 नाम के बीच में कर रहे हैं. Mostly of them are small, mid, and very kind of limited percentages into large. हमारा जो रीबैलेंस 19th को होता है वो होगा, बट आई थिंक प्लान अभी थोड़ा चेंज है. प्लान है कि जो भी कंपनीज आपके स्मॉल केसेस में हैं, rest assured they are very high quality companies. They were kind of recommended when they were at right valuation. Of course, they were far from mean. The reason being, uh, prior month tak markets were moving in kind of one direction, and therefore सारे स्टॉक्स अपने एवरेज से, मूविंग एवरेज अगर आप एक कॉमन पैरामीटर लो, उससे बहुत दूर मिले हैं. बट इवन दो दे वर एट द राइट वैल्यूएशन लेवल एंड क्वालिटी बिजनेसेस. हो क्या रहा है कि सभी ने स्ट्रेस टेस्ट के लिए बोला. सभी ने बोला कि क्या आपका रिस्क फ्रेमवर्क है. फंड हाउसेस से एमफी से लेटर गया सारे फंड हाउसेस को. फंड हाउसेस को अभी वो 15 तक मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है कि हमारा स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं. अगर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि हर महीना 18,000 19,000 20,000 करोड़ का एसआईपी जा रहा है, और सारा एसआईपी मूव हो रहा था, काइंड ऑफ लार्ज चंक वाज मूविंग इनटू स्मॉल कैप. So SEBI, of course, is taking a lot of actions these days in terms of trying to control कि अगर कुछ redemption आया, वो redemption already आने लग गया because fund houses started announcing one after the other. कल भी ICICI ने announce किया कि they also kind of very very particular about not taking lump sum investments into small cap specific fund. उससे हो क्या रहा है कि सारा broader market impact हो रहा है. एंड जो क्वालिटी बिजनेसेस भी हैं जो कि अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, और अब वो इतने चीप हो गए, वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, इतने चीप वैल्यूएशन मिल रहे हैं कि आई मीन एक तरफ हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं दे आर गोइंग थ्रू इमीडिएट वॉलेटिलिटी, कि उनका पोर्टफोलियो 10-12% डाउन है. बट एक तरीके से जो हम बात करते थे आपसे इवन वन टू वन कॉल्स में, ये जो स्पेस में आप इस समय आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ये एक्चुअली एक एडवांटेज भी ऐड हो जाएगा. बिकॉज वैसे हम फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करते. वी डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ इन जैसे मैं अपने और वीडियोस में बोलता हूँ कि आप एसआईपी में तो फिर भी डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो कि मार्केट गिर रहा है ऊपर जा रहा है, आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से यू कैन कंटिन्यू डू एसआईपी. एंड जनरली फॉलिंग स्टॉक मार्केट में अवॉइड करिए, क्योंकि वो इट इट वर्क लाइक अ फॉलिंग नाइफ. यहाँ पे भी मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप अभी तो ऑब्वियसली सिट ऑन एज इस काइंड ऑफ जो भी आपका स्मॉल केस का वैल्यू है. डू नॉट पैनिक. I am not recommending to add more money, but as soon as the market will start to show some signs of kind of recovery in this segment, which will eventually happen, this will be an golden opportunity to kind of pump up the value, right? And then actually participate in these good quality businesses at much lower valuation in the times to come. Times to come का मतलब हुआ कि अभी 15 के बाद मान लीजिए सबमिशन होगा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिस्क फ्रेमवर्क का क्लैरिटी, थोड़ा सा रिकवरी हुआ. बट इतना टफ फॉल है, इतना स्टीप फॉल है कि वो स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रेक हो जाता है इन टर्म्स ऑफ से मार्केट स्ट्रक्चर. उसमें क्या होगा कि अब जब रिकवरी आएगा तो ऑल ऑफ यू एज वेल एज फंड हाउसेस विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स लार्ज कैप, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग. तो हमने क्या सोचा है, हमारा एक्शन प्लान क्या है कि क्योंकि आपके पास सारे हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं जो आप होल्ड कर रहे हो हमारे स्मॉल केस के थ्रू,
अनलेस वी रियली सी कि कहीं पे कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज है, एंड विच इज काइंड ऑफ ऑल्सो, जहाँ पे व्यू नहीं दिख रहा कि 3 महीने में भी कुछ एक रिवर्जन, क्योंकि अभी क्या है कि पहले रिवर्जन तो मीन हुआ तो पुल बैक होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इतना दूर आ गए ऑन द लोअर साइड। सो हम क्या करेंगे अभी, देर इज नो प्लान टू book losses, right? Absolutely no, because it's not a short term game. अभी कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन there is a plan to now increase our portfolio from say 5, 6 to 7, 8। हम अब एक दो नाम ऐड करेंगे अपने रीबैलेंस में, और जो ऐड करेंगे वो हम थोड़ा सा, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी ऑन द लार्ज कैप साइड। उससे क्या होगा कि दो एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आपको लार्ज कैप का जो इमीडिएट रन आएगा उससे आपको एक इमीडिएट अल्फा मिलेगा। दूसरा जो ये जो आप एक डीप से 10%, 15%, अगर आपका का कोई भी स्टॉक है, वो जब काइंड ऑफ रिकवर होगा तो इट विल गिव यू अ डबल पुशअप, एंड देन व्हेन दैट रीबैलेंस हैपन, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, राइट, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो यू हैव, यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन मनी। तो दैट इज द गेम प्लान। हम पोर्टफोलियो को 5 to 6 से मूव करके 7 to 8 पे जा रहे हैं। अपनी रीबैलेंस 19 को लार्ज कैप का उसमें व्यू ऐड करेंगे। एंड आज हम सुबह से टीम पूरा डिटेल रिव्यू कर रही थी कि क्या क्या हम कवरेज कर रहे हैं, कौन कौन स्टॉक्स हमारे पास, हमारा पूरा यूनिवर्स में 30 स्टॉक्स के अराउंड है। वी हैव रिव्यूड वेरी केयरफुली। 95% plus companies are sitting at very, very, good valuations, good quality companies, and कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है when it comes to what kind of companies you have put your money into across our portfolios. So मैं अभी क्विकली यूट्यूब जाता हूँ, देखता हूँ कि अगर कुछ भी। ओके, अंसार से रविला is saying speak in English, somebody is saying speak in Hindi. Okay. So he's speaking in English. Hello, should I average? Okay. Okay. Hi Aryan, please speak in English. Okay, I'm confused किस में बोलना है, but I'll try. We don't know Hindi, how to understand. Okay, let me again repeat in English. Uh, so Arup, good afternoon. Hi Ansar. First question, can I do average? No, you cannot right now. As I said, once we rebalance and we add a layer of slightly higher market cap, and where the strength, अभी तो देखिए large cap में भी there's a, if you see today's market, right, I mean कहीं कहीं कुछ control में नहीं है। Do not average as of today. When you see signs of recovery, since you speak to us on a regular basis, we have a very active WhatsApp number, right? Up whenever that signs of recovery will start to come, there will be a good point kind of start adding money. We'll of course let you know, right, via this method, by coming online and on your WhatsApp, in the WhatsApp. Abhi, if do not exit, stay invested. We have done a very careful re-review of all the kind of coverage we are doing on all across 6 baskets. They're absolutely good names, absolutely good companies, very high quality business, no problem at all. When market will settle, I do not know, Arup, when market will settle because nobody knows. It was looking for trigger to kind of profit booking, but now it's not about profit booking. It has gone into a cycle of everybody is shifting, kind of exiting from part of their portfolios, not just profit booking, but uh, also people are now kind of in a panic mode at large, right? Which that's why the subject is small and mid cap market volatility, because markets are designed to go up, right? As we say. So if you are in the market for 6 months, 1 year, couple of years, absolutely they are designed to go up, and they will. We have re-reviewed, as I said, because the question is coming is, भाई ने 10 लाख डाले, उनका लॉस 1 लाख हो रहा है, क्या करें अल्फा ब्लेंड में। सौविक भाई ने 10 लाख डाले हैं। सौविक भाई, आई आई अंडरस्टैंड कि आप उस इस समय 1 लाख लॉस पे हो, बट वो नोशनल लॉस है। एज यू वुड नोटिस दैट हमने रीबैलेंस नहीं किया है, वी हैव नॉट रीबैलेंस, विच वुड मीन वी हैव नॉट काइंड ऑफ बुक्ड any of your loss, and whatever we are now trying to do is, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं रीबैलेंस कर दूं, आप रीबैलेंस अपडेट लो ना लो, लो तो आप लॉस बुक करो, बट व्हाट वी रादर आर डूइंग इज, वी आर, because we play in a very small space in terms of the number of stocks, we have done very careful review of our holdings. There is no need for we to book loss right now.
Just that it would be good that we kind of add some stability to the portfolio by adding the large cap stocks, which will be say 1 to 2, while keeping the current portfolio as is, rather than cutting losses. And as I said, whenever we see, and I don't know when, it could be 1 month or 2 months, whenever we see the signs of recovery, signs of they now pulling back to their original mean, we will let you know, and you can always kind of think about averaging. But abhi ke liye don't average, because it will unnecessarily kind of participating in the crazy kind of correction, right? So wait. Okay, Conver, when should I add more money? I think I answered that question. So भाई ने 10 लाख रुपए डाले. Okay, सर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पब्लिक होंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे? देखिए अभी तो इम्पैक्ट क्या होगा इलेक्शंस तक, वही बात है ना कि आई मीन आई डोंट वांट टू रियली कॉल आउट कि एक्चुअली में ट्रिगर क्या है. The real matter of the fact is the portfolio, the small cases are not performing, right? That is the absolute true picture. And even if you look at my own holdings, which I might be carrying, they are also not performing, right? So, abhi to from the last first of the month to now 13th, I mean, 2 weeks, we have been also kind of just in the waiting game. RBI started to kind of call out a couple of companies in terms of, I don't want to make names of any company here, but RBI as a regulator, of course, are kind of taking stringent measures in terms of checking NBFCs. SIB is then also making sure that SIB keeps talking about MSME bubble, that keeps talking about, you know, in terms of the risk framework, in terms of stress testing, because matter of the fact is from last couple of months, there was a one side inflow of SIP money into large, into mid and small. And what has happened in that period, there were a lot of say poor quality small case businesses, right, which have kind of kind of peaked in a way that they were doubling up every couple of months. The investments you have made via our small case are absolutely in good companies, as I would like to reiterate. So there is of course a worry. I understand the worry. We also are very unhappy about our portfolio seeing a hit of from 55% to say now 40%. It's a dent on our numbers. But I don't really care about the numbers which I have on the small case, kind of public platform. I don't want to maintain that number. I want to maintain that if my investors have invested their hard-earned money in these small cases, we will rebalance when there is a value add for the investor. Whether you are an old investor in our small case from 4 months ago, or you are a new investor who have just invested last week and facing the real heat. जिन्होंने अभी इन्वेस्ट किया पिछले 10 दिन में, वो तो बेचारे इन अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन राइट नाउ. Please give me number of stocks to 10. I think Ravi Lab, thoda sa, if you go and check other small cases, even check mutual funds now, right? 10 stocks ho, yeah, 20 ho, the impact is same. You can't really kind of prevent that. And as I said, right, uh, um, um, have a horizon of at least 6 months so that the cycle is okay. It's kind of taken into account. Okay, it's now book profit book. Yes, profit book is happening. If you're asking us to profit book, we have been doing the rebalance as needed, and uh, for the next rebalance, since we already are in that 15 2 weeks of 3 weeks of kind of a situation where the portfolios are down by 10%, we would may not have an opportunity to book profits. Absolutely, we might have to book loss, but I don't think don't see any immediate reason to book loss. We would like you to add on the investments only for the new additions we will do. And if we increase the weightage, in case we see that the current company, which has now fallen 10%, is now even kind of very attractive in terms of valuation, we'll kind of increase the weightage there. We do not shift to liquid base and reinvest when there is a recovery sign. It's better to book small loss rather than waiting for recovery. So, Defense Planet, not don't know your name, and if you can tell your name, it will be easier to call. See, it's not about me maintaining the shift to liquid bees and then kind of reinvest. It's for me, it's a switch of a click of a button. Overnight, the rebalance
goes to all of you. I have 1200 more, like kind of my my esteemed investors. I can always do that, right? I could do it today. I could have done it a week ago. But if you think about it, I have to see what kind of users portfolio currently I have in my small cases. If I do the switch in a kind of a click of a button, that okay, I am rebalancing to liquid. You all, I mean, all of you who have been invested from some time are in a stage of kind of losing your kind of hard-earned profit, which you kind of had made in the last couple of weeks and months. So I don't, that's unfair. Plus, when we have to actually shift to liquid base, it actually means that there is a need to shift to liquid base. It's not about liquid base is absolutely a kind of instrument which we actively track. But as I said, the names you have invested in via this mortgage are anyhow good names. So we will still wait for any need of adding to liquid base. But as I said, this time this rebalance on a monthly and on weekly will have additional 1 2 names absolutely added, so that some weightage starts moving into a safer asset. I mean less volatile asset, I would say, not safer asset, less volatile kind of instruments, whether it is liquid B, whether it is gold Bs, whether it is a large cap kind of undervalued stock. Okay, today market is down and small case is 5 6%. As I said, market, when you look at market, you are looking at Nifty 50. Nifty 50 is large cap. Our small case are not large cap. Our small case are market cap agnostic. So they will, because when markets are moving 1% up, they are all moving 5% up, right? So that also kind of answers your question. Software Hindi. Pinto is asking Savik Bhai to ask some technical questions. Okay, so Pinto, you can also ask technical questions and not wait for Savik to. Okay. एक्सपर्ट इज सेइंग, मैं और सौविक भाई को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, कितना भी लॉस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, 6 मंथ बाद तो ऊपर जाना चाहिए, शायद लॉन्ग टर्म में हमारा पाप धुल जाएंगे। अ, देखिए, मेरे पे भरोसा तो रखना ही है, अच्छी बात है, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ मैनेजिंग द स्मॉल केस, बट भरोसा तो मार्केट पे रखना है, क्योंकि मार्केट्स एज आर डिजाइंड टू काइंड ऑफ गो अप, राइट, and not go down. So in a long run, absolutely, equity as asset class are designed to beat inflation, beat kind of derivative. I mean the what we call uh, fixed assets, instruments, debt instruments. I mean, so absolutely, 6 months का horizon है, आप अच्छे से रहिए। सर, करेक्शन होता रहता है, आज मार्केट गिरा है, थोड़े टाइम बाद फिर से मोमेंटम में आएगा। जब लॉन्ग इतना शोर क्यों कर रहे हैं, लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? नहीं, लोग इतना शोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग आर प्रीटी न्यू इन द मार्केट, पीपल हैव ओनली ज्वाइन आफ्टर 2020 crash. I'm so to answer Ravila question also, my Demat account goes back to 2011, right, which was 13 years ago, and I've been in the markets actively from 2015, Ravila, if that answers your question. So that is my number of years in the market, and I've seen the cycle of. I mean, of course, I was a working professional in 2008 market crash, not into market, but a working professional already in the industry in 2008 crisis, and I've seen 2013, 2017 ka run. Then, of course, the what happened in 2018, and then the COVID, and then post-COVID. Everybody has seen that, and most of you are absolutely have come after COVID. So we have not seen this kind of small correction, I'll say. Markets could go 30%, 40% as well, right? So that's how about it. But the whole idea was to kind of come live and talk about the extreme volatility you are seeing in the portfolios, and the way we are planning to cater to that is only by right now by adding 1 or 2 additional names to kind of add some layer of stability, with the intent of whether we add gold bees, liquid bees, or for example, any other large cap, that will be decided when the rebalance will hit. Right now, the only reassurance I wanted to give was the names you see are all good businesses. It will be a great opportunity for you in the times to come to add on the money, not today, because let's the fall settle. But when the you see this first signs of kind of recovery
it will be a great opportunity to add more money in the same companies because they are, already at right valuation and now they are becoming even cheaper. And they are getting a heat of a broader market sentiment, right? ठीक है, काफी इंग्लिश में बोला मैंने रवीला. आई थिंक आई स्पोकन इनफ इन इंग्लिश रवीला. आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चंस. इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन इन हिंदी, कोई हिंदी में बात करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए. अदरवाइज आई थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ दिस. कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछना चाहता है, हिंदी में समझना चाहता है? 17 people are watching me, which is absolutely good to know. uh, shall I then conclude this? I will also share this with my I'll ask the team to share this link uh, on my, WhatsApp. For all of you to kind of watch it later in case you have any questions. सर, जो आफ्टर कोविड भी आए हैं उनको भी समझना चाहिए कि 2020 से अभी तक कितने रिटर्न दे चुके हैं स्मॉल कैप स्टॉक, तो उसमें 10-12% करेक्शन कुछ भी नहीं है. या यू आर अ वेरी वेरी मैच्योर्ड इन्वेस्टर एंड गुड टू नो दिस व्यू. Is the right time to balance to balance basket? रुक जाइए for another week, Srinivas. 19th is when we rebalance. I'll say do not do anything for the next 6 days. 19th is a good time, right? The markets are, when it talks about the timing of them, see, we can't time the market in some sense, right? So why I'm saying that you should wait for 6 days. Nothing major will change, but at least this kind of catastrophic kind of one-way fall can need some breather, right? And we also will rebalance on 19th morning, so that time you can, of course, absolutely go ahead. Okay, Arup is saying, sir, please tell me one thing. Tell me that one thing, Arup. बोलिए अरूप. वन थिंग के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे? आई एम जस्ट वेटिंग इन केस यू हैव एनीथिंग टू आस्क. सर प्लीज टेल मी वन थिंग. ओके, आया नहीं अरूप. प्लीज पिंग अस ऑन chat.golfi.app. सॉरी, मुझे अभी ये स्टॉप करना पड़ेगा. एंड यू कैन बुक आर टीम मीटिंग विद मी ऑन golfi.app. तो chat.golfi.app पे आप पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और meet.golfi.app पे आप हमारे साथ कैलेंडर लिंक आएगा, आप कैलेंडर बुक कर सकते हैं. और कैन यू प्रोवाइड स्टॉप लॉस? नहीं, स्टॉप लॉस देखिए, दो 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 ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के. देखिए, या तो आप खुद मैनेज कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस डिफाइन कर रहे हो. एक बात ठीक है, अगर हम स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट रिसर्च दे रहे हैं, तो जब हम रीबैलेंस कर रहे हैं, वो रीबैलेंस ही अपने आप में या तो वो स्टॉप लॉस है या फिर वो प्रॉफिट बुक है, टारगेट है, राइट? सो रीबैलेंस के हिसाब से करिए. मेरे हिसाब से अपना आप, you have to leave it to the system, and you have to leave it for at least 6 months to see any kind of potential benefit or hope. इलेक्शन के टाइम में वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, क्या हम सेफ ऐसे की तरफ मूव करेंगे? यस, इलेक्शन के टाइम पे वोलेटिलिटी रहेगी. 19 का जो रीबैलेंस है अभी मार्च का, वो भी बहुत हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, और 19 अप्रैल का जो रीबैलेंस करेंगे वो और सिग्निफिकेंट होगा. हो सकता है, जस्ट काइंड ऑफ वर्ड ऑफ कॉशन सो दैट आई कैन अनाउंस इट पब्लिकली. हो सकता है अगला रीबैलेंस के लिए हम 1 महीने का वेट ना करें, जैसे हम इस टाइम किया या करते हैं यूजुअली मंथली पोर्टफोलियोज के लिए. अगर हमें लगेगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, और वहां पे अगर लॉस बुक करना भी पड़ रहा है, तो वी विल हैव टू टेक दैट एक्शन. बट अभी तो आई थिंक ये अभी 15 का अब वो आने दीजिए, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस को सबमिट करना है. थिंग्स विल हैव मोर क्लैरिटी. What next, sir? बोलिए आप, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि रिमेन इन्वेस्टेड, डोंट चेक योर स्मॉल केसेस एवरी डे, डोंट चेक योर डीमेट अकाउंट्स एवरी डे. Focus on your core business. Let your small case managers do the rebalance when needed, and just follow the process, follow the system, remain invested, don't worry about it. We recommend those in profit booking to book it. देखिए, सबका अलग अलग टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सबका अलग अलग प्रॉफिट दिखा रहा होगा. किसी ने 4 महीने पहले किया है, तो किसी ने कल ही किया है. आप बुक कर लोगे. आई हैव नो कंट्रोल इन सेइंग करिए नहीं करिए, आपको करना है, आपका डीमेट अकाउंट है, आप कर ही सकते हो. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं मेक श्योर करूं कि मैं तभी आपको एग्जिट कॉल दूं या रीबैलेंस करूं तब वहां पे रियल नीड हो. अब आपके पास प्रॉफिट कितने नंबर पे था, वो कितना अभी रह गया है, क्योंकि से आपने 8-10% का एक फॉल उसको पिछले you have seen that. So I leave it to you, but if you want to, if you're not doing investment on your own, and if you're doing via small case, I don't think you should look at individual profits, because it's about then small case as a basket.
will you be launching the green small case next? I don't think Souvik वो हो पाएगा अभी green portfolio launch या wealth what we call wealth waves जो हम सोच रहे थे theme based first April because markets में देखते हैं कैसे unfold होता है उसके हिसाब से decide करेंगे. Suryansh is sitting at 1 lakh loss. How to approach? Suryan's approach is, and as I said, I think you joined a little late. The companies where you have invested your money are good businesses, are at right valuation. I'm not asking to kind of add as of now in terms of averaging your losers. I'm not asking to even add more money as of today. But the kind of investments you have made are all rightly placed, and we will when we rebalance we'll would like you to kind of add some amount in terms of our additional buys which we will do one or two in the rebalance. And therefore this loss which is notional we would like it to remain notional and don't book it. And it's little long term game, at least when I say long term 6 months the minimum market cycle you need, right? So that's what you should do. Harsh Meddi saying you didn't rebalance. That's the worst decision ever. You could have added large caps of 1 week at least. Harsh देखिए हो सकता है वो decision worst हो in hindsight. I do not know the decision yet. Rebalance इसलिए नहीं किया because as I think also you might have joined late, Harsh. I already explained. Rebalance से आप expect कर रहे हो कि वहां पे मैं भी पैनिक कर रहा हूँ आपकी तरह and लॉस बुक कर रहा हूँ मेरे 1,000 investors का and without any framework, right? Without any kind of rationale to it. So rebalance, अगर skip किया गया, there's a reason of why it is skipped. A reason being, you are participating in that fall for no reason when you know that you are sitting in a very very concentrated portfolio which are well researched and kind of put in that portfolio. Sir, your small case is best and it is well researched and concentrated. That's unknown. Okay, thank you. Souvik, so our weekly rebalance small case will start seeing some last one from next week. जो वीकली लार्ज कैप में यस आई थिंक स्टार्टिंग में क्या होगा सौविक कि थोड़ा सा एडिशन होगा. सो हम लोग जो 6 स्मॉल केस हमारा जाए वहाँ पे आप 7 या 8 नेम्स देखना शुरू करोगे. सो वील स्टार्ट एडिंग नेम्स फर्स्ट बिकॉज ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो अभी एग्जिस्टिंग नेम्स हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हिट पे हैं कि हम उनको उनका लॉस कट करें अनलेस वी रियली सी कि उनके उनके नंबर्स खराब आने वाले हैं आगे जाके. बट अभी के लिए अभी के लिए तो हम नया नाम ऐड करेंगे. सूर्य सेइंग सो बेसिकली रीबैलेंस इफ वी बुक लॉस देन आई शुड नॉट डू इट. आई शुड ऐड इट बाय पुटिंग एक्स्ट्रा मनी, राइट? रीबैलेंस में जब हम कोई नया नाम ऐड करेंगे तो वेटेज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे एज यू नो, राइट? तो वहाँ पे वो नाम बुक करेंगे जहाँ पे आपका मिनिमम आई मीन देखिए दो चीजें हैं, दो तरीके से इसको आप वी डील विद इट, राइट? वन, इट्स नॉट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द नंबर. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि नंबर कैसे मैनेज करें. इट्स अबाउट कि जो कंपनीज हैं उसमें ये साथ हमारा उस पे जो हमारा व्यू है वो चेंज हुआ है या वो व्यू इंटैक्ट है. अगर वो व्यू इंटैक्ट है और जहाँ पे हमें एक इमीडिएट पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे तो उनका हम नहीं करेंगे क्या बोलते हैं वेटेज चेंज. बट जहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी कोई इमीडिएट रिकवरी के साइंस नहीं है और हमें नया नाम ऐड करना है, नया 20% एलोकेट करना है पोर्टफोलियो का, तब जहाँ पे हम वो कम करेंगे वेटेज वो सेल होगा आपका. और जो सेल वही होगा जहाँ पे हमें इमीडिएट साइंस ऑफ रिकवरी नहीं दिख रहे होंगे. टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या कंपनी का बैलेंस शीट देख के करते हैं. 5 स्टेज प्रोसेस है अरूप. फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं. ड्रीम बॉय, mutual funds are selling stocks and retailers are booking their profit, but FI is still buying. Is this positive point for us? Mutual funds are, of course, shifting gears, selling small. I mean, redeem वहां से move हो रहा है money into large. रिटेल भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एफ आईज बाय कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन है. सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप एक छोटे यूनिवर्स में प्ले करते हो और आप फोकस काम करते हो तो आपको वो कंपनी जो ऑफ कोर्स आप ये अभी 10% नीचे हैं बट आपको वो और सस्ती मिल रही हैं, राइट? क्योंकि वो अच्छी कंपनीज हैं, वेल रिसर्च्ड, वेल गुड फंडामेंटल बैलेंस शीट्स, क्वालिटी बिजनेसेस. सो पैनिक तो होगा ही होगा एंड आई एम कैन टोटली रिलेट टू कि 10-15% आप नीचे हो गए तो यू विल ऑफ कोर्स गेट वेरी काइंड ऑफ इट्स अ बैड फीलिंग टू हैव, राइट? But it's a positive point. You once you add more money on a slowly kind of
ऑन अ स्लो काइंड ऑफ, मान लीजिए आपने प्लान किया है मनी ऐड करना 1 लाख का, 25-25 हजार 4 बार ऐड करोगे, तो यू आर बेसिकली गेटिंग एडवांटेज देयर. चेंज वीकली रिबैलेंस टू नीड बेसिस. नीड बेसिस तो कर सकते हैं नील, बट आई थिंक अभी उसका रीजन नहीं है करने का, क्योंकि नीड बेसिस इज वेरी वेरी अनसर्टेन. नीड बेसिस से मेरा एडवांटेज है कि मैं आज भी रीबैलेंस कर दूं, मैं कल भी रीबैलेंस कर दूं, मेरा नंबर खराब नहीं होगा. बट मेरे कस्टमर्स जो आज खरीदे हैं मेरे साथ, वो कल उनका रीबैलेंस हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी अनफेयर टू देम. सो जहां हमने एक डेट अनाउंस करते हैं, क्योंकि गेम तो कोई शॉर्ट टर्म नहीं खेल रहा है यहाँ पे, ना ही हम शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं ना आप शॉर्ट टर्म खेलो. गेम तो लॉन्ग टर्म है. और अगर लॉन्ग टर्म गेम है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का होराइजन है, तो नीड बेसिस रीबैलेंस का क्या करोगे आप, मतलब हाउ विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क. ओके, बट इन दिस केस, बट या नीड बेसिस रीबैलेंस जस्ट टू काइंड ऑफ कंफर्म कि अगर नीड लगेगी. अब मैंने बोला कि 19 मार्च और 19 अप्रैल का जो रीबैलेंस है वहां पे नीड लगेगा, बीच में करना होगा, तो यूट्यूब पे लाइव आके रीबैलेंस करेंगे, बताएंगे कि रीबैलेंस कर रहे हैं. Suren Singh, but in this we need to book loss, but it's suggested an extra money to buy new stock and keep the whole sold stock in your portfolio so that in future we'll get a slight recovery. सूर्यांश, डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, कितना आप मार्केट समझते हो. आई नो यू एनी हाउ यू स्पोकन टू अस एंड यू स्पोक टू आई थिंक टीम साई आल्सो यस्टरडे ओवर 1-to-1 मीटिंग. मैं सजेस्ट ये नहीं कर रहा कि आप उस कॉम्पोजिशन को खुद मैनेज करो. मैं ये कह रहा था कि हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे व्हेन वी ऐड न्यू नेम्स, बिकॉज वेटेज ऐड होगा, तो कुछ नाम्स तो बेचे ही जाएंगे, राइट, बिकने ही पड़ेंगे. तो उसको उस तरीके से स्लाइटली कम करेंगे वेटेज, कि 15 था तो 12 कर दिया, जिससे कि आपने बहुत छोटी क्वांटिटी बेची लॉस में. और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप अलग से खरीद लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ. जो हम आपको नया 20% का वेटेज देंगे और आपका 20% एग्जिस्टिंग 80% से निकालेंगे, वहाँ आप बुक करोगे लॉस इफ यू डू नॉट एडिंग मोर मनी. Even if you're adding more money, then we are also kind of booking slight loss in those names where we see कि अभी रिकवरी में बहुत टाइम लगने वाला है, तो उस साइकिल में हम और ऐड करेंगे. That's what I'm saying. Is does it answer your question, Suryansh? आई थिंक अच्छा रहा आधे घंटे का. आई थिंक अब तक का सबसे लंबा लाइव है ये. मैं 15-20 मिनट करता हूँ, आई थिंक ये काफी अच्छा. 32 मिनट्स हो गए अभी इस लाइव को, एंड आई थिंक वी हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. 21 people are also watching it live. That was the message to you, and absolutely feel free to talk to us, call us, chat with us, book a meeting with us. Thank you. That's the update, and okay, thanks. Got that. Sunansh saying, okay, thank you, Sunansh. Good that you could follow what I was saying. So well, very well. I mean, and don't panic. Remain invested. Equities are designed to go up. Businesses are designed to work for you. Right? Those promoters are working on your behalf to make you money because they want to grow your business and not destroy their business. So all good businesses will continue to make money for their investors. Yeah. Chalo. Take care. Thank you for coming live. Yeah, sorry. Absolutely my pleasure. And it was my duty to do that. Chalo, take care, everybody. Bye. Take care.